जैसा कि जानते हैं कि भारतीय धर्म दर्शन में दीप का अपना अलग महत्व है। हमारे त्योहार, दैनंदिन पूजा पाठ सभी दीपक के साथ रीतिबद्ध होते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा हमारे सनातन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें हमारे संभवतः पूर्वजों का इस पद्धति के पीछे यही उद्देश्य रहा होगा कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है। हम ये प्रयास करेंगे इस सीरीज के द्वारा कि भारत की अध्यक्षता कितना सार्थक है, क्या वर्ल्ड में ये वर्ल्ड का नेतृत्व कर सकने में सक्षम है। इसी विषय पर आज लेक्चर का आयोजन किया गया है। पर हमारी परंपरा रही है कि हम आगत अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो इस अवसर पर मैं अपने फ्रेंड से ब्यूटी, किरण और अन्य लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार जी का बुके और पट्टा देकर, खाता देकर सम्मानित करें। माननीय श्री एहतेशाम खान सर। आगे से नहीं जाइएगा। अगली कड़ी में हमारे यशस्वी कुलपति महोदय का सम्मान डॉक्टर निर्मला कुमारी के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर निर्मला कुमारी अपने माननीय यशस्वी कुलपति का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर एहतेशाम खान सर से कि वो आकर गेस्ट का वेलकम करें और इंट्रोडक्शन दें। सर। थैंक यू कुमार घोष साहब। अपने डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऐतिहासिक मौका है कि हमारे बीच जेएनयू से पधारे पॉलिटिकल साइंस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के SIS के प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब हमारे बीच हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब की पहल पे बहुत शॉर्ट टाइम पे उन्होंने आना स्वीकार किया और बहुत सारी दुश्वारियों के बावजूद भी वो हमारे बीच में हैं। तो ये उनका बड़ा उपकार है। हम सब उनका ऑनरेबल वाइस चांसलर की तरफ से, मगध विश्वविद्यालय की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे MA और PhD के शोधार्थियों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करते हैं। सर, आपका ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब इस बात के लिए नहायत खुश हुए कि G-20 सीरीज लेक्चर चल रहा है हमारे यहाँ और हमें सबको मालूम है कि 2-3 घटनाएं घटी हैं इंडिया में ऐसी। इंडिया G-20 प्रेसिडेंसी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर वर्ल्ड लीडरशिप पे जो लेक्चर होगा वो शानदार होने जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि सर इस पे क्या बोलेंगे, लेकिन मैं थोड़ी बैकग्राउंड की बात कर दूं। इतना तो मालूम ही है कि इंडिया न केवल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बल्कि दुनिया में जिस ढंग से उसका इमरजेंस हो रहा है, तो दो चीजें हमारे बीच में है सर।
प्रोफेसर अरविंद साहब का अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में जब आपका ये इंडिया पोटेंशियल फॉर वर्ल्ड लीडरशिप की जब आप बात करेंगे, टॉक करेंगे हमारे बीच से अपने डिपार्टमेंट में, तो हमारे दिमाग में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से उभर करके आ रही हैं, जो अभी भी घटित हुई है विश्व के पटल पे। पहली ये कि रशिया यूक्रेन वार और उसमें जो इंडिया की जो भूमिका रही और जिस तरह से बैलेंस किया उन्होंने नॉर्थ और साउथ को, फर्स्ट वर्ल्ड को और सेकेंड वर्ल्ड को भी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें भी जो अपने रोल रहा, तो एक हम देख रहे हैं कि हमारा एक नए ढंग से पुनर्जन्म हो रहा है, नए अलाइनमेंट का भी, और इमरजेंस हो रहा है द ग्लोबल साउथ का सर। और द ग्लोबल साउथ फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, और जो 1969 में इसको कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज ओग्लेस्बी, एज आई कॉल इट, जॉर्ज ओग्लेस्बी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, तो वो इमरजेंस उसका हुआ था, एक बार ग्लोबल नॉर्थ का डोमिनेंस हो गया था वियतनाम वार की वजह से, और जब ब्रेकअप सोवियत यूनियन का तो फिर वो और आगे बढ़ा सर। अब जो हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वार में, और फिर से हम लोग देख रहे हैं कि अलाइनमेंट का उभार और इंडिया का लीडरशिप है, तो थोड़ा मेरे बच्चों को मैं बता दूं कि जब हम लोग ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड में मैं बात कर रहा हूं सर के सामने, तो ग्लोबल साउथ में सिर्फ साउथ की कंट्रीज नहीं आती, द ग्लोबल साउथ में साउथ की एशिया, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी आती हैं सर। हमारे अमेरिकन स्टडीज जो है उसके एक्सपर्ट हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो जेएनयू में होता है, उसमें अमेरिकन स्टडीज, कैनेडियन स्टडीज और लैटिन अमेरिकन स्टडीज और खासतौर से सिक्योरिटी का महारत एक्सपर्ट है, ढेर सारी किताबें। तो इसलिए ग्लोबल साउथ में सिर्फ वो कंट्रीज नहीं है, बल्कि एक जबान में जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज, जो नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ से उनके मुकाबले में पुअर है, या जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत दयनीय स्थिति में या निम्न स्तर का है। हमको लगता है इस परिप्रेक्ष्य में इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप उभर रही है, इंडिया की स्थिति कैसी है, हम कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड के सिनेरियो में हम एक हमारा मुकाम तो अलग बनता चला जा रहा है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब लीडरशिप कोई होती है तो मुल्क में अमन और शांति होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सर कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया का नाम नहीं है सर, लोकतंत्र एक व्यवस्था का नाम है, प्रणाली का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि जो दूर दराज के रिमोट एरियाज में खड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति भी है, हम उसका कितना ख्याल रखते हैं। लोकतंत्र सिर्फ बहुमत से सरकार बनाने का नाम नहीं है सर, क्योंकि बहुमत से सरकारें बन जाएंगी, वो प्रक्रिया की बात होती है। तो एक ऐसी प्रणाली है जो पहले जो दूसरी कम्युनिस्ट या राजाशाही या दूसरी प्रणाली तो उससे भिन्न है, जहाँ जिसमें देखा जाता है प्लूरलिस्टिक सिस्टम है कि एक अदना व्यक्ति भी है, उसका हम कितना ख्याल रखते हैं। शायद इसकी मुल्क में या जिसके वोट में या सरकार बनाने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो, तो हम देखेंगे कि अपना देश किस तरफ जा रहा है, और हमारी ग्लोबल लीडरशिप इमरजेंस के रास्ते में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मैं देखता हूँ कि रोल ऐसा होना चाहिए कि हमारे सारा चीज़ सस्टेनेबल हो सके। थैंक यू। आपको सुनना है, मेरे दिमाग में जो बातें थी और मेरे वाइस चांसलर साहब ने जो बातें थी, सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहे हैं और प्रोफेसर कुमार साहब उस पर लेक्चर देंगे। पोटेंशियल फॉर वर्ल्ड लीडरशिप इंडिया G-20 प्रेसिडेंसी हमको मिली है, उसके तहत तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें थी कि रशिया यूक्रेन वार के बाद हमारी एक अलग से उभार हुआ है, और लगता है कि दो चीज़ें होंगी, डेवलपिंग कंट्रीज के हम नेता के तौर पर नहीं, ग्लोबल लीडर के तौर पर भी उभर सकते हैं, नॉन अलाइंड लीडर के तौर पर भी उभर सकते हैं, और वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर भी और डेवलपिंग कंट्रीज के भी एक नेता के तौर पे हम उभर सकते हैं। हम कितना दुनिया में छाप छोड़ेंगे हमारी पॉलिसीज का, और सबसे बड़ी चीज़ की जो फॉरेन पॉलिसीज या रोल होता है ग्लोबल, उसमें ये देखेंगे कि अपने देश में रहने वाले लोगों का हम कितना ख्याल रखेंगे। ये बड़ी चीज़ होती है कि जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है, या और जो चंद तरह की दुश्वारियाँ, उसको हम कैसे पार करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपने बेहतर तरीके से लीडरशिप के लिए लोकतंत्र कितना आवश्यक है इसको आपने बताया। अगले वक्ता के रूप में मैं सोशल साइंस के पूर्व डीन JNP सिंह सर को बस 2-4 मिनट में सर अपना आशीर्वाद दे दें और कुछ बोल दें हम लोग को। JNP सिंह सर।
भगवान विष्णु की मोक्ष की धरती पर अवस्थित मगध विश्वविद्यालय अवस्थित गया जी एवं गौतम बुद्ध के ज्ञान की स्थली बोध गया में अवस्थित मगध विश्वविद्यालय बोध गया के राजनीति विज्ञान विभाग और लोक प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक स्पेशल लेक्चर की व्यवस्था की गई है, जिसमें G-20 पर हमारे JNU के प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब ने अपना विचार व्यक्त करेंगे। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद, अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं मगध विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी को भी विशेष रूप से अभिनंदन और थैंक्स देते हैं कि इन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में यहाँ आए हैं। इन्हीं का परिणाम है कि आज इस विभाग में अरविंद बाबू अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं माननीय कुलपति महोदय का प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इनकी प्रशंसा कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसे विपरीत समय में इस विश्वविद्यालय का बागडोर संभाले हैं कि बहुत कम ही समय में इस विश्वविद्यालय की खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं हम लोग सभी लोग इनके ऋणी हैं और ये मानवर को नमन करता हूँ। इसके साथ ही साथ लोक प्रशासन विभाग के प्रभारी एहतसाम खान जी, पोलिटिकल साइंस के अध्यक्ष निर्मला जी को, ये अंजनी कुमार घोष जी को इत्यादि एवं इस सभागार में बैठे हुए सभी विद्वान प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षों एवं विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर अरविंद कुमार जी का जो विचार आएगा उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुनेंगे और उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थोड़ी देर से आए हुए हमारे विद्वान प्रोफेसर जिनका मैंने स्वागत नहीं किया, हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष निर्वेंद्र बाबू, पूर्व विभागाध्यक्ष और सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर भारत भूषण सर, डॉक्टर दास सर, प्रमोद चौधरी सर, कविता जी, वंदना जी, और हमारे पूर्व रजिस्ट्रार एवं वर्तमान इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस आर्ट्स एंड कॉमर्स डॉक्टर दीपक कुमार, गोपाल जी सर एवं सौरभ, दीपा जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं राजनीति विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मला कुमारी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट आकर अपनी बात को रखें। डॉक्टर निर्मला कुमारी। आज जनसंख्या दिवस भी है और इस अवसर पर हमारे कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय ने आज जो व्याख्यान रखा है वह
हमारी जो हमारे विश्व के जो जनता है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ से जो भी विचार सामने आएगा वह हम समझते हैं कि हमारी जो ये मानव है हमारे जो उनको एक विशेष ये जाएगा। जनसंख्या हमारी जो है उसकी जो वृद्धि हो रही है उसका संरक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मानव सभ्यता है उसका जो विकास हो रहा है, लेकिन आधुनिक युग में केवल हम लोग विकास की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि विश्व की जो ये युद्ध चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इसमें हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वह दो समुदायों में विभक्त हो गया है। और हम लोगों को ये हमेशा ये डर रहता है, सताता है कि कब हम लोग अगले विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़े। हमारी जनसंख्या जो है वो यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण उनकी क्षति हो रही है। हमारी जनता को उसका हर्जाना भोगना पड़ रहा है। जैसे कि जो हमारे जो सैनिक हैं वो तो उनका तो ह्रास हो ही रहा है। हमारी जनता जो है जो जिनका भी कोई रोल नहीं रहता है इस युद्ध में, उनको भी इसके लिए इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हम डॉक्टर अरविंद कुमार जो आए हैं सर, तो हम लोग बहुत प्रतीक्षा से उनका ये हम लोग ये कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपने जो विचार वो यहाँ रखेंगे वह मानव कल्याण के लिए उनके विचार को देखा जाएगा और मानव कल्याण में उनके विचार की अहम भूमिका होगी। माननीय कुलपति महोदय ने बहुत अच्छे समय पर इनके विचार प्रकट करने का ये जो समय रखे हैं, इसके लिए बहुत मैं उनको आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जितने भी हमारे आए हैं, हमारे विभाग मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे आए हैं, कई आए हैं, माननीय आए हैं, हमारे जो मुख्य वक्ता आए हैं सर अरविंद सर आए हैं, मैं उन सबों को हार्दिक दिल से उनका स्वागत करती हूँ। और मैं सर का विचार सुनने के लिए बहुत प्रतीक्षा कर रही हूँ और मैं सर से ही सुनना चाहूँगी कि सर अपना विचार यहाँ प्रकट करें, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जाकर उनको अपने जीवन में उसका ये करें, उनका प्रयोग कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को धन्यवाद मैम। अब हमारे यशस्वी कुलपति अपने विश्वविद्यालय की ओर से माननीय मुख्य वक्ता जो हमारे अतिथि भी हैं उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। माननीय कुलपति महोदय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए हुए देश के स्तर के ख्यात प्राप्त स्कॉलर, अमेरिकन स्टडी के चेयरमैन और बिहार की मिट्टी के लाल अरविंद बाबू, विभागाध्यक्ष निर्मला जी, सत्यश्याम बाबू, विनीत कुमार घोष जी, अनंदन बाबू, सामने बैठे हुए भूपेन श्रीवास्तव जी, भारत भूषण जी, दीपक बाबू, गोपाल जी, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, यह हमारे लिए गौरव की बात है
दास जी आप भी हैं, आपका भी नाम लेना नहीं है, सौरभ भी है, प्रमोद चौधरी जी भी हैं, तुम्हारा क्या नाम है, कौन है, अब्दुल्ला है, आप सभी लोग बताना चाहता हूँ। राजेश बाबू BSW आए हुए हैं। यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी लेवल का है कार्यक्रम, जगह बहुत कम है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ रविंद्र बाबू। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में कमी हो गई, हम लोग उसको और हॉल में करना चाहिए था, लेकिन आप अपने मिट्टी के लाल हैं, बिहार के हैं, आप बड़ी जगह पर हैं, मणिपाल में थे, JNU में थे, लेकिन आप यह भी समझिए यह विभाग इस मामले में अद्भुत है कि कोविड काल में जहाँ सब जगह पढ़ाई ठप थी, लोग डिपार्टमेंट नहीं आते थे, तो भी एहतसाम भाई, जयनंदन बाबू, घोष साहब और तमाम शिक्षकों ने इस पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को जोड़ के बच्चों के साथ बन के आया। फरवरी में, मार्च में हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया और उसके बाद हम लोगों ने मई में एक प्रोग्राम कराया। इस डिपार्टमेंट के बच्चों ने जिस तरीके से शानदार आयोजन करवाया और जिस परफेक्शन के साथ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिस दक्षता के साथ, मतलब मैं उसको कहूँगा जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ उस प्रोग्राम को करवाया, वो अपने आप में अद्भुत था। इसके लिए मैं पूरे दोनों विभाग को संयुक्त रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मगध विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य रहा है, हम भी यहाँ के छात्र रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, बाइफर्केशन के बाद हम पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय चले गए, मुझे सौभाग्य से कुलपति बनाया गया। यहाँ पिछले कुछ सत्रों से एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, टीचर्स आते थे, परीक्षाएं नहीं ली जाती थी, बच्चे लौट के चले जाते थे, बीच में क्लासेस नहीं हो रहे थे, टीचर सिर्फ आते थे, बच्चे नहीं थे, क्लासेस नहीं हो रहा था, सेमेस्टर एडजस्ट नहीं कर रहा था। परिस्थितियों में भी हमारे शिक्षकों ने अपना धीरज नहीं खोया। यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने इस विभाग में आते रहे और विभाग को जिंदा रखा। ये अपने आप में आप सभी जानते हैं कि मगध विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मगध विश्वविद्यालय कालांतर में पटना विश्वविद्यालय के बराबरी का माना जाता था, लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है, हमको नेक्स्ट से C ग्रेड आया, उनको भी वही ग्रेड आया, B आया उनको पटना यूनिवर्सिटी को। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि कुछ मायने में हम आज भी बिहार के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। खासकर मैं पटना यूनिवर्सिटी देखा हूँ, दरभंगा, उसमें पॉलिटिकल साइंस विभाग को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, उससे मैं मानता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आपका विभाग, एहतसाम भाई, निर्मला जी, आपका विभाग आज भी सबसे बड़ा। पटना यूनिवर्सिटी में सरकार के द्वारा G-20 पर आयोजित कार्यक्रम हुआ, लेकिन हम लोगों ने सरकार की लिस्ट में नहीं की, शुरुआत हम लोगों ने की और फिर कर रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं है, कम बड़ी बात नहीं है। और हम लोगों ने अपने बीच एक ऐसे स्कॉलर को लाया है जो सिर्फ देश के स्तर पर नहीं जाने जाते हैं, इनका रिकग्निशन आप जाइए ईस्ट यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोपियन यूनियन में अरविंद बाबू का परचम लहरा है। अरविंद बाबू आए हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्लासरूम ऐसा, ये लेक्चर रूम ऐसा नहीं है, बट दिल आपका बिहार का है, माटी आपकी बिहार की है, बच्चे आपके बिहार के हैं। कल भी एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको हम लोगों ने विभाग के स्तर से बढ़ा करके उसको पूरे यूनिवर्सिटी के स्तर पर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। कल वो DDE में
उसको कल आयोजित और सर भी रहेंगे और देखेंगे। हम लोग गलतियों से सबक लेते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रही बात लेक्चर के बारे में मुझे क्या कहना, मैं भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का छात्र रहा हूँ और टीचर भी रहा हूँ। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज जितनी बढ़िया विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की है, किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश नीति इतना सफल नहीं है। इस सच को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है। यूरोप एक मोर्चे पर है, यूक्रेन के साथ है। अमेरिका एक मोर्चे पर यूक्रेन के साथ है और वहाँ इंडिया बार्गेनिंग करने की स्थिति में है। रूस, रसिया हमको पेट्रोल दे रहा है और उस पेट्रोल को हम उसको रिफाइन करके ऊंचे दाम पर यूरोप को बेच रहे हैं। और आज हम कहते हैं कि रसिया हमारा मित्र है, रूस हमारा मित्र है, उसको भी अमेरिका नहीं चाहते हुए स्वीकार कर रहा है कि अमेरिका के भी हम दोस्त हैं और रूस के भी हम दोस्त हैं, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। सही मायने में आज निरपेक्षता की नीति अरविंद बाबू, जयवंदन बाबू, हम समझते हैं वो कागजी कार्रवाई एक थी। बातें बहुत हो गई, बहुत कही गई गुटनिरपेक्षता में, निष्कर्ष उसका कुछ नहीं निकला। जब भी विश्व में युद्ध हुआ तो कहीं न कहीं अमेरिका खड़ा रहा, रूस खड़ा रहा, गुटनिरपेक्षता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहा। लेकिन आज हमको G-20 का प्रेसिडेंसी मिला है, ये सौभाग्य की बात है। कम से कम भारत कैसा है, भारत का सांस्कृतिक दर्शन कैसा है, भारत का फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, भारतीय लोग क्या है, भारतीय रिसर्च क्या है, भारतीय इंडस्ट्री क्या है, भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय लोग कैसे हैं, भारत की भाषाएं कैसी है, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत का खान पान कैसा है, भारत का पहनावा ओढ़ावा कैसा है, यह सब जानने का और बतलाने का प्रयास हम लोग G-20 के और देशों के लोगों को बुला के कर रहे हैं। तो हमको लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमारी संस्कृति प्रधान थी, हमारी सबसे उत्तम थी, हमारा संस्कार सबसे, आज भी मानते हैं भारत एक समय सोने की चिड़िया था। तो कहीं न कहीं हमारे देश में पुष्पक विमान बनते थे, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, क्योंकि प्रकारांतर में हम पिछड़ गए। लेकिन हम अपने वैभवशाली गौरव को, अपने अतीत को, अतिथियों को, G-20 के देशों को बृहत रूप से उनको नज़दीक अपने पास बुला करके उनको बताने का जो काम कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं प्रकारांतर में भारत को विश्व शक्ति, महाशक्ति बनाने में कारगर होगी। रही बात भारत में G-20 के साथ जो हम लोगों का अपना कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं न कहीं भारत के लिए लाभकारी होगा। सभी देशों के साथ हमारा एक्सचेंज होगा, ज्ञान का एक्सचेंज होगा, मिलिट्री का जो नॉलेज है उसका एक्सचेंज होगा, हम लोगों में दोस्ती बढ़ेगी, वहाँ की जनता यहाँ आएगी, हम वहाँ जाएंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, उससे एक दूसरे को समझेंगे। तो हम, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, स्टार्टअप का नारा दिया है। मेरा यह मानना है, मैं बार बार युवकों से अपील करता हूँ कि आप नौकरियों के पीछे नहीं भागिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू करके ज्ञान जो आपके पास है उस ज्ञान को और आगे देने का और भारत के विकास में उसको ले जाने का आप काम करें। इसलिए आप छात्रों से अपील है कि आप G-20 के एक प्रभावशाली राष्ट्र के नागरिक हैं। आपका कर्तव्य है इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, जहाँ सारी दुनिया गोल हो चुकी है, एक मुट्ठी में है, एक ग्लोब में है, एक गूगल के अंदर आती है सारी दुनिया, ग्लोबलाइजेशन का यह युग है। उस वक्त आप अपने ज्ञान से, अपने आत्मनिर्भर भारत बनने की सोच से, अपने संस्कार से, अपने नॉलेज से, अपने बड़प्पन से भारतीयता को
प्रदर्शित करिए, दर्शित करिए, ताकि भारत की गरिमा जो है पूरे विश्व में और उसको आगे बढ़ाने का काम करे। आज जो टॉपिक है इंडिया प्रेसिडेंसी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर वर्ल्ड लीडरशिप, अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं अरविंद बाबू के बीच बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। अरविंद बाबू कोई साधारण चीज़ नहीं है, लेकिन घर के हैं, घर की बात को समझेंगे और क्षमा प्रार्थी है अरविंद बाबू। ये कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए था। मैं फिर बुलाऊंगा, आप तो घर के हमारे मित्र हैं, आपको मैं बुलाते रहूँगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का जो नाम है, बिहार का जो स्टेटस रहा है, बिहार का जो संस्कार रहा है, बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय रही है, तक्षशिला विक्रमशिला रही है, यहाँ चाणक्य हुए हैं, मगध की धरती है, तो यहाँ से लोग निकले हैं। यहाँ जयप्रकाश की धरती है, यहाँ बाबू जगजीवन राम की धरती है, तो वैसे लोगों की धरती है जहाँ अनुग्रह बाबू थे, श्री बाबू भी थे। और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जी 17 सालों से हैं और उन्होंने जो विकास का काम जितना किया है, हम समझते हैं कि शायद ही किसी राज्य में इतना काम लिमिटेड स्कोप में किया गया है। और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, शायद पूरे देश के अंदर किसी राजनेता ने नहीं किया है। और वह आप गाँव में जब जाएंगे, अपने मुजफ्फरपुर आप जाइएगा, तो मुजफ्फरपुर से दूर किसी सकरा और ढोली में स्कूल के टाइम पर जाइएगा, जब बच्चियां एक पोशाक पहन करके एक वेल ड्रेस्ड और साइकिल पर चलती हैं, तो बिहार, अद्भुत बिहार आपको देखने को मिलेगा। बिहार में प्रगति हुई है और हम समझते हैं कि उस प्रगति के कड़ी में आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। हम सब अपने कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप स्पष्ट और दूरदर्शी व्यक्तित्व के साथ साथ अतिरिक्त आकांक्षाओं के आदर्श हैं। आपने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के विस्तार हेतु अपने अद्भुत समर्थन को दर्शाया है। आपके कुशल मार्गदर्शन से मगध विश्वविद्यालय का नित्य नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। इसके लिए हम सब तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे कुलपति महोदय हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साकिब। अब हम लोग का इंतजार बहुत खत्म हो रहा है और माननीय चीफ वक्ता जो है, मुख्य वक्ता है, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। उसके पहले मैं उनके लिए 2 लाइन लिखा हूँ। दिलों में जोश और जज्बा भर दे, आज मैं वो ख्वाब लाया हूँ। उठ रहे हैं तुम्हारे दिलों में सवाल, उनका मैं जवाब लाया हूँ। आपके दिलो दिमाग में जो जवाब खोज रहा है, जो प्रश्न कौंध रहा है G-20 प्रेसिडेंसी पे, उन सवालों का जवाब माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार सर देंगे। लेकिन इनके पहले मैं ये चाहूँगा, थोड़ा अगर सब्र करें तो इनके बारे में मैं बड़ा लंबा इनका कार्यक्षेत्र रहा है, थोड़ा सा समय मैं लूँगा, मैं पढ़ देता हूँ। Dr. Arvind Kumar is Professor of United States Studies at School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Prior to his current assignment, he was Professor and Head at the Department of Geopolitics and International Relations at Manipal University. He has been conducting policy and academic research on strategic and international security issues in addition to his teaching since 1990. His research interested are in the field of strategic capability of China and Pakistan, nuclear doctrine and strategy,
nuclear weapons and delivery system, India's internal security issues, ballistic missile defense, space security, global security issues, export control regime, and matters relating to India's foreign policy, Indo-US relations, and defense strategy and planning. He is formerly research faculty at the National Institute of Advanced Studies, Bangalore, and the Institute for Defense Studies and Analysis at New Delhi. He was a visiting fellow at the Henry L. Simon Center, Washington, D.C. He was a postdoctoral fellow at the Sandia National Laboratory, USA, and a visiting research scholar at the Institute of International Studies at Stanford University. He was APISA and IDSS fellow at the Institute for Defense and Strategic Study at Nanyang Technology University, Singapore. He was appointed as the visiting fellow at the University of New South Wales, Sydney for 3 years period. He has number of publications to his credit in journals, edited volume, magazines, and newspapers. He was the co-editor of a volume titled Science and Technology to Counter Terrorism, published by National Academies Press, Washington, D.C. His more recent publication is one of them, India's is on the theme India and the United States in the emerging world order in the Indian Foreign Affairs Journal. He has delivered a number of talks both in India and abroad on international security and foreign policy issues. He was member of high-level committee constituted by the Government of India on research and development in national security. He has been a member of editorial board of a number of journals, including UNISCI discussion papers, which is published by the University of Spain, Madrid. He has also been a member of the advisory board of Contemporary India program of University of Warsaw, Poland, and Hochschule University of Applied Sciences, Bremen. He has been a member of the governing council, Center for International Studies, Mumbai. He is a member of International Studies Association as well as European International Studies Association. He holds a MPhil and PhD in International Politics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. सर का क्षेत्र काफ़ी बड़ा विशाल है। आज हम लोग इनको पाकर, इनको सुनकर धन्य होंगे। सर, आपका फिर एक बार स्वागत, मंच पर आएं और अपनी बात को हमारे ऑडियंस के जो सवाल उठ रहे हैं दिमाग में, उनको शांत करें। धन्यवाद सर। आइए। Honorable Vice Chancellor, Professor Sasi Pratap Sahi, Head of the Department of Political Science, then Professor Khan is here, my other colleagues from other departments, ladies and gentlemen. I am very pleased to be here before you to speak on a very important theme, that is G-20 and India's presidency, and whether India has the potential to emerge as a world leader, the Vishwa Guru. What I will do in the next maybe half an hour or so, that I will combine both Hindi and English so that you really have a very wide grasp of understanding what I am talking about. See, India's leadership as the president of G20 came at a very difficult time, when the whole world was really facing a number of challenges in every area. It's not that they were limited only to Russia-Ukraine conflict. The challenges were far too many, especially in the context of climate change, environmental security, food security, post-pandemic global order. A lot of these challenges are there. All of you are aware about this.
And in that context, this presidency has come. So पूरे विश्व में हो क्या रहा है कि भारत से एक अपेक्षा है कि भारत कैसे इसका समाधान निकाले, और भारत में समाधान निकालने की जो कैपेसिटी है वो कैसे उभर कर आए और पूरे विश्व में एक कॉन्सेंसस तैयार करे। इस पर मैं चर्चा करूंगा, और इसके पहले उस पर मैं चर्चा करूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि G20 का गठन क्यों हुआ था, और G20 का गठन के पीछे जो मैंडेट थे वो मैंडेट अचीव हुए कि नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उसी विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका सोचा कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो विश्व की जो आर्थिक स्थिति होगी वो कैसी होगी। बिकॉज एज यू नो दैट द यूएस वाज नॉट अ सीट ऑफ पावर देन, द सीट ऑफ पावर वाज रिसाइडिंग स्पेशली विथ जर्मनी, विथ जापान एंड अदर सेंटर्स ऑफ पावर। द अलाइड पावर्स वे नो मोर एग्जिस्टिंग एज द सीट ऑफ पावर, एज द सेंट्रल पावर। तो उसमें इनको चिंता था कि जब विश्व युद्ध खत्म होगा तो कैसे भू राजनीति बनेगी, कैसे भू आर्थिक स्थिति को समझा जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, एक जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स की जगह का नाम अमेरिका में है, न्यू हैम्पशायर में है। तो एक बुलाया उन्होंने, एक मीटिंग बुलाया, और ये बात को रखा उन्होंने, अमेरिका लीड लेकर रखा कि कैसे विश्व राजनीति को संभाला जाएगा, कैसे वो जो आपका इकोनॉमिक स्थिति पूरे विश्व का होगा उसको कैसे इनफैक्ट समझा जाएगा, कैसे उसका समाधान निकाला जाएगा। तो उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में two institutions really emerged, and these two institutions were called the World Bank and the International Monetary Fund। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन था इनका एक स्पेसिफिक मैंडेट दिया गया था कि कैसे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ओवर द दैट द वर्ल्ड बैंक kept addressing to the needs of the United States only. The International Monetary Fund kept addressing to the needs of the European countries only. There was nothing left for the developing countries as such. And in that context, the challenges really became far too many. And what were those countries which became part of the developed countries? जिसको विकासशील देश कहा जाता है, वो विकासशील देश जो थे वो गिने चुने थे, पूरे विश्व में केवल 7 थे। ये 7 में जो थे आपके, एक ही एशिया से था, वो जापान था। और जो भी आपके जो विकसित देश में आते, अमेरिका हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, फिर आपका फ्रांस हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, ये सब जो विकसित देश थे ये अपना एक समूह तैयार करना चाहते थे, जिससे क्या होगा कि ये अपने आप में इनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा और उनका जो है बड़े एजेंडा सेटिंग जो करेंगे वर्ल्ड के लिए, उनका बात समझा जाएगा। The decade of 50s, decade of 60s, these 2 decades we are seeing in transition in terms of understanding the behavioral patterns of these many emerging developed countries. विकसित देश किसको कहा जाता है? इसमें से कोई विद्यार्थी आपको बताएगा विकसित देश किसको कहा जाता है और विकासशील देश क्या है? So, उसका एक डेफिनेशन है, जो विकसित देश जो होता है उसका पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो हाई होता है। अगर आप पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हाई है तो आपके पास सब चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन भी पूरा रहेगा, तो ये एड्रेस करता है। और जो विकासशील देश होता है उसका पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। चाइना के पास अभी 20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, लेकिन चाइना अभी भी विकसित नहीं है, वो विकासशील है। चाइना इज स्टिल अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपिंग कंट्री। तो हुआ क्या कि 50s और 60s में ये जो हम बता रहे थे 6-7 कंट्री का मैं जो नाम लिया था, ये 7 देश जो था आपस में मिलकर चाह रहे थे कि कैसे उनका एक क्लब बने, कैसे वो लोग पूरे देश को कंट्रोल करें, पूरे देश विदेश जो होता है पूरा कैसे कंट्रोल करें। और इसमें वो क्या किए कि विकसित देश होते हुए भी विकासशील देशों का जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल नहीं कर पाए। 70s के दशक में हुआ क्या कि एक आर्थिक क्राइसिस आया पूरे विश्व में, और उस क्राइसिस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस विकसित देशों में पड़ा। तो 1976 में हुआ क्या कि दीज नेशंस केम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 7। G7 का आप लोगों ने नाम सुना होगा, G7 का इस्टेब्लिश हुआ। अभी भी पूरा जो था पूरा विकसित और विकासशील का डिबेट चल रहा था, कैसे इनको अलग किया जाए। बाय द वे, सेकंड वर्ल्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर आफ्टर द डिमाइज ऑफ द सोवियत यूनियन। द
the concept of the third world does not exist in international relations after the demise of the Soviet Union. The second world, third world is no more existing as a part of lexicon, as a part of usage in our dictionary. These are all over. What we are using mostly is developed countries and developing countries. Or in place of developing countries, we are using emerging economies. तो इसमें क्या हुआ कि 70s में जिनका establishment हुआ, by then, as you know, that India in particular had taken two decisions when it became independent. The first decision, which was very vital, I want all the students to hear this. When the whole world, as you know that after the World War II got over, a number of nations had emerged, both in Asia and Africa. And these nations really became independent politically. Economically, they were very much dependent on these many powers which were trying to really set the agenda for the world. India क्या किया? Many of these nations were either joining the capitalist bloc, which was led by the United States, or the socialist bloc, which was led by the former Soviet Union. India chose the path of non-alignment as a pursuit of India's foreign policy orientation. Because India basically was very smart enough in terms of seeing that if it adopts non-alignment as a pursuit of its policy, India can really work with both the poles. Because India has never wanted to lose any of the poles. Both the poles were so important for India. That is how the non-alignment concept came. India never wanted to, in fact, leave the US or only work with the USSR, or work with the USSR and live with the USA. There are a lot of examples, as you know, the decade of 50s, as all of us are aware, that how basically India went to the US asking for the food aid. And obviously the decade of 60s, again when they saw a lot of challenges coming from the US Congress, that they were not willing to supply food aid to India, India started the green revolution with the support from the United States. And when the decade of 60s and 70s came, as you know, how India tilted towards the Soviet Union, because by then India was kept in isolation by the USA, and Pakistan was adopted as an ally of the United States. So anyway, those historical details I don't want to go. I just want to say that India's two decisions in particular, that when the whole world was either joining the capitalist mode of production or the communist mode of production, India chose the path of socialistic pattern of society with mixed economy. Means India's economy was closed. And in that context, the rest of the world obviously was not able to find any nexus with India economically. The economic cooperation was limited. India's economy was closed. And that really led to a lot of challenges internally for India. As India grew and understood the predicament of the emerging world, India chose the path of open market economy in 1991, the so-called liberalization policy. So when you understand these many predicaments which India had faced because of its internal contradictions, the challenges really kept growing for India in terms of becoming a part of the mainstream of the global affairs. India was not a part of the mainstream of the global affairs. The agenda setter, those countries which you could set the agenda for the world, were very limited. And most of the time you find the exclusive club coming in the form of these group of countries which wanted to see that how best they could really integrate the other economies in a manner which could support their growth only. So what I'm trying to tell you is that the decade of 70s, when they saw the birth of the G7, that was only to be meant for addressing to the needs of the developed world. The decade of 80s, and as you know what happened the later part of 70s, China liberalized, China really became open market economy, and that really made China some sort of a mainstream coming as a mainstream of the global economy. But India was not. India basically, when it liberalized in the part of 90s, and obviously by then, lot of sign of positive growth in the field of economy came in a number of nations across the world. If you take Asia as a continent, if you take and try to understand Asia, Southeast Asia has 10 countries. And these 10 countries, such as you know, the Malaysia, Thailand, then you have Singapore, this side you have Myanmar, then you have Philippines, then you have Cambodia, then Vietnam and Laos. If you see these 10 countries, which are very important, especially for maritime region, as you know, many of the nations' trade is seaborne. So these 10 countries in Southeast Asia really saw the birth of two countries showing the sign of consistency in terms of their growth rate. One such country was Indonesia, and second was Singapore. So in the 90s again, there was a revolution in the field of economic development for the rest of the world because of the emergence of globalization. West Asia saw a consistency in the growth of Saudi Arabia. Saudi Arabia became a part of major economy in the whole of West Asian region. North Asia, if you see, South Korea became a major country
in terms of showing the sign of consistency in their growth rate. South Asia had obviously seen India emerging on the horizon because it really liberalized in 1991. The 10 years of its economic growth from 1991 until 2000 was very much consistent. And likewise, if you take, for example, the East Asia saw, obviously Japan was a part of that club, it saw China emerging on the horizon. So I think a lot of these countries were coming up mainly to demonstrate their contribution in the overall GDP of the global economy. So in that context, the decade of 90s was very particular to understand how these countries were showing the consistency in terms of their contribution in the GDP of the global economy. And many of these things which really happened also saw a setback because of the economic recession. You may have read about this something called this economic crisis and that Asian economic crisis which happened, and that really may be short-lived, but it really impacted a great deal in terms of seeing that how these countries were not contributing enough. But despite the fact that the whole idea of the economic recession happened, the group of 7 thought it is high time they should integrate with other emerging economies. So that group of 7 took Saudi Arabia from West Asia, South Korea from North Asia, India from South Asia, from East Asia, China they took, and likewise European Union was showing this very consistent growth rate. European Union, and then one country, Turkey. So again, G7 got really extended to G20. In the year 1999, when the crisis was being witnessed in Southeast Asia, the so-called Tiger economic crisis, and that was short-lived. But when G20 was established, it had only 2 tracks. The first track, which was again very limited in terms of understanding, that was called financial track, that how through that track they could understand each other's economic concerns. And that was not elevated to the leadership summit. It was only finance minister will meet of all the 20 countries. They will discuss about their predicaments. They will try to achieve consensus. They will bring the solution to the larger problem. The first decade of 21st century, starting from 2001, again saw something happening during the mid of the first decade. That was the world economic meltdown. This world economic meltdown elevated the G20 status from the financial track to the level of the leadership track. So in real to me, the G20 was established in 2007. 1999 was the beginning with the 2 tracks, the central governor, the governor of the central banks, they will meet, the finance ministers will meet, but not the leadership. Let's say there's a high leadership, they will not again be meeting. So G20, the real functioning of G20 started happening after the world economic meltdown in 2007. Now we are in 2023. Before 2007, at the finance level track, India was given one presidency. But since that was not a leadership presidency, it was not called the first or the last. That is why we are calling it first. This presidency has come only because of the rotation. The rotation basically now next leadership, in fact next president will be Brazil. From 1st December, you will see that Brazil will occupy the presidency from India of G20. So 2007 as of now, the mandate which was very specific that how these nations could really cooperate among themselves, how there could be an enhancement or augmentation of international economic cooperation. And that international economic cooperation obviously was seen to be the major mandate of G20. Unfortunately, what had really happened, that those economies which were emerging on the global horizon, the global map, these economies obviously we are seeing the challenges emanating from climate change. Because once you develop economically, you have a correlation with your energy requirements. And in that energy requirements, if the dependency is on the fossil fuel, the increase in the concentration of greenhouse gas in the atmosphere will keep increasing. So you have a challenge that how you really keep that thing sustainable, where you have less dependency on the greenhouse gas and your developmental agenda should not get impeded. It should keep continuing. And in that aspect of the debate, many of these nations, as you know that until recently, the United States was the largest emitter of greenhouse gas because they produce more, they consume more, and they pollute more. If you start consuming more, you will start polluting more.
India basically, as you know, was always constant in terms of its emitting the greenhouse gas. India remains at the 4th position. Right now, China is the largest emitter of greenhouse gas because China has not compromised on the development agenda. At the same time, it could not really get substituted with any of these energy resources which could really help lessen the increase in the concentration of greenhouse gas in the atmosphere. More and more concentration of greenhouse gas in the atmosphere, more and more challenges for climate change. So I think that part of the debate became very prominent, that how these countries which were emerging, and you know that 85% of GDP of the global economy comes from these G20 members. 2/3 of the global population reside in these G20 members. 75% of the global trade comes from these G20 members. So you can imagine that you have 200 countries across the globe, and how important these 20 countries have become. 20 countries in the sense that 19 plus European Union. European Union has roughly 28 countries. So you can imagine 28 plus 19 is roughly 43 countries. So I think what I'm trying to take here, that a lot of these challenges which were coming, which were seen to be a part of the problem for the world, now India is coming as a part of solution to the world. How it has happened? India, as you know, was an agenda setter in Paris Protocol. Many of you may have read about Paris Protocol, which again really addresses to the challenges of the environmental security and the climate change. And the Paris Protocol, one of the stipulations which were put in the Paris Protocol, that it is high time the nation states have to behave responsibly. They have to be very sensible because of the negative impact of the climate change, and how these countries should really be showing less dependency on the use of the fossil fuel. And one clause was that these countries have to bring in the percentage, the use of the fossil fuel less than 60% by 2030. About India is that India has achieved less than 60% of the use of the dependency on the fossil fuel by December 2022 only. So now that is being cited as an example that how India has been able to achieve that. And that is how India has not compromised on any of the developmental agenda. India has obviously very slowly and steadily, as you know, that India has now achieved 3.5 trillion economy, and that is something very significant for India's point of view because of the number of challenges which India confronts level. And that is something which we need to understand largely in the context of India becoming sustenance, following the sustenance pattern in terms of developing as well as addressing to the needs of the climate change. And as you know, India has already announced that how it could really become net carbon emission by 2070. Anyway, it's a long way to go. But whatever the things really have happened in terms of energy transition, it is called energy transition. If you see the energy security constituents of many of these developed countries, as well as many of these emerging economies, you will find even if the United States has everything in surplus, they have uranium in surplus, which helps them in adding to the nuclear power. Nuclear power does not emit carbon. So those of these constituents of energy security, which does not emit carbon, that is something which they have in surplus. But they still use fossil fuel in their energy security constituent, which again is against the larger norm of the climate change. That is how the US was the largest emitter. Now China has succeeded that. US remains the second largest emitter of the greenhouse gas. European Union, consisting of 28 countries, they are the third largest emitter of greenhouse gas. India remains the fourth largest emitter of greenhouse gas in the atmosphere. So the whole responsibility lies on India's shoulder also. How India can build the consensus among these G20 members where there could be developmental agenda. As you know, the pattern of the economic growth is such where none of these emerging economies can afford to neglect the developmental agenda. And that is something which we are trying to really understand largely from the experience which the developed world had, and how this developing world obviously really need to follow some of these constituents, some of these patterns, where there could be a smoother transition of energy constituent, where there could be the use of renewables, the solar energy, the wind power, the nuclear energy. All these aspects of the debate are happening. India is taking the lead. So whether Bharat can become a Vishwaguru, that is a question now. Something is happening now across the universities now. Whether India has that responsibility to lead the global affairs, whether India can really assume that responsibility. It's again the one thing which is very important. It's not that you keep claiming that you are a great country. Others should recognize you.
And once that recognition comes from the others, that has value. Self-declaration of or boosting of one's own development will not be leading any country anywhere near to a great power. So India basically is very particular in that context. It is the United States perhaps which really has been understanding India better, trying to see that how India has been seen as a responsible player. India is no more a part of the problem for the world system. India has become a part of the solution to the world system. And that is something which is now getting ingrained in the minds of many of these G20 members. So that is the first thing. International Economic Cooperation is going to be the plan, how that could really be understood by the members of the G20, how best they could really be showing the sign of inclusive and accelerated and obviously resilient growth. That is something which India is banking on. India perhaps also is being seen that how India has never worked for zero-sum game. Zero-sum game means that how a country can get benefited at the cost of the other. And that is something which now is being seen. India works for win-win situation. I don't know how many of economics persons are here. It is something very important to understand about this whole idea of the creation of the win-win situation. When India talks about one earth, one family, one future. You may have seen the slogan of the G-20, and that was again coined by India. That is very, very well planned, well designed, because that really talks about that India understands the world as a family. So the world problem India is taking as India's problem. Many persons debate that India has to resolve its own problem first, then go for the global problem. But they don't realize that many of India's internal problems are also the global problem. See, the climate change is not within India's territory. Climate change is a global menace. And that they are not that India has so many problems. I think every problem is linked right now with environmental security and climate change. And that India understands it very well. How India can create win-win situation, that is what is a preferred priority of India. And that is something which India has been boasting for. So one earth, one family, one future, that slogan is well designed to suit India's tradition. Honorable Vice Chancellor very clearly highlighted about India's, the way India is coming as a part of mainstream global affairs, how India is depicting its cultural heritage by every means. And that is something which India is reflecting. And that is what the rest of the world wants to learn from India. So I think that is something which is the main mandate. And a lot of these interactions which have happened among the G20 members on India's soil in the last, since India has assumed the presidency since 1st December 2022, demonstrate India's will to take up those responsibilities and lead the global affairs. India basically is on the rising curve. India is on the cusp of power. India certainly is not in hurry, and the rest of the world is trying to understand India's behavioral pattern. What is India's fundamental goal? What exactly India is reflecting as a part of its intention. Understanding each other's intention is not an easy. And that too, understanding about a country's intention. I think I have been spending almost 25 years studying Pakistan and China. I have not understood China-Pakistan well because of their intentions keep changing. Their psychological intentions are so different. As you know that India really proceeded with a good bus diplomacy, and they have had Kargil. You can imagine that how Kargil really was planned. When India was trying to handshake, they were planning Kargil and backstab India. So again, a lot of these issues really come largely in the context of understanding the growing patterns of India's diplomatic maneuvering. And that is something which is ingrained, especially on India's mind this time in G20. The G20 is seen as an opportunity for India. This platform, if India does not really get a start, does not really get organized with the other members on many of these pertinent global issues, of the challenges which the world has been confronting will keep continuing. The second point which I want to make is something which again Honorable Vice Chancellor has said, and I want to really slightly elaborate on that. That is called knowledge sharing. Because as you know that most of these aspects of the knowledge sharing and most of this pioneering effort, especially in the field of technology, really happens in the United States. What does United States do? That they will try to give you some part of technology, but they will not give you the technological know-how. And in that context, India really is pushing for that how best India can extract this knowledge, and this knowledge should be available for all the members of G20. And these are something on clean technology and green technology. That is why if you talk about that how these advances in the green technology are needed for addressing to the climate change, that is a linkage which I see India is pushing for. Because a lot of these advances in particular
especially in the context of the green technology and the clean technology, are being seen happening in the United States. India has been attempting to push for telling the US and trying to work with the US closely and seeing how the other members of G20 also get the same benefit. And that is what India has been pushing for. And obviously the September meeting, whatever Vice Chancellor, on 9th and 10th, this is going to happen. The leadership summit is going to happen on 9th and 10th September, when the members of all the leaders of G20 countries will come. They will sit, they will discuss about all the issues which India has charted out, and they will try to reach consensus and see that how best that can move forward. The third thing which I see again, which is very important, as many of you are aware, India has been pushing for making India a digital India. And as you know, digital transformation is not that easy, because it is 24/7 work for India every day. We don't realize as a citizen, but every day there is a challenge for India's critical infrastructure. There are 4 categories of critical infrastructure. One is banking and finance. Because you just imagine if a terrorist group gets penetrated to any of these banking institutions, what will happen? Because they will just see India collapsing economically in no time. The second is power grid. Suppose, because everything is computerized, power grid is something which is very important, that how you protect your power grid, because if there is a penetration from the terrorist group or any of the state institutions, and suppose there is a blackout for 24 hours in Delhi, what will happen to Delhi? Just you think on these lines. The third again is very important for India. As you know, India is a nuclear weapon state. So the nuclear command and control protection is India's responsibility. Suppose there is again a penetration by the terrorist group. And fourth again is very important. That is again, we have the largest railway network in the world. Suppose your seat is in A1, your seat has been changed to S1. Knowing people mindset, they will die on the platform in the stampede. So protecting even the railway network is so important for India. So the digital India transformation is not that easy. How is that could really be protected when a consensus is built among the nation states which have an edge in terms of evolving those requirements which really makes the nation states less vulnerable. There's something called more and more advances in technology, more and more vulnerability for a country. So more vulnerability, more problem. How nation states would like to remain invulnerable. There's something called vulnerability paradox. In fact, I give a workshop for 3 days on critical infrastructure, how you protect and secure to the scientific community, how you can really protect and what are the advances the world has become for you. So that again, digital transformation, making India digital India, again is not an easy task. How is in fact the countries can work together in terms of realizing these goals. And that is something which is again very pertinent and very important in the G20 deliberation. The fifth thing, which again is very important, which India has been trying to push, because India perhaps is taken as an example, and that was again highlighted by Honorable Vice Chancellor, and that was seen as what word he has used, I think, Nari Sashaktikanam, women's empowerment. Women's empowerment, and that is something, women-led development. These are part of the G20 agenda. And India perhaps is one of these countries where it has seen, even it is slow and steady, but this progress is something which is very, very relevant. The world is watching this. How the literacy rate really is improving significantly. You just imagine the literacy rate in India, the way it has improved, especially among females, is remarkable. Even the US was a developed country. The US really provided this right to enfranchise in 1920. Can you imagine? They didn't give the right to the females, right to vote, right to enfranchise until 1920. And you can imagine that how India really was taking the lead in terms of providing these opportunities from day one. So the rest of the world really has been eyeing on India that how best they can learn from India's experience in terms of women empowerment and women-led development. That is something which is going to be one of these major significant mandate for this G20 deliberation. The sixth part of the agenda will be climate finance. And climate finance again is supposedly should be coming from the developed countries because they are the major polluters in the world. But there is a lot of inconsistency. As you know, when President Trump came to power, he withdrew from the Paris Protocol. So the 4 years commitment of the United States in addressing to the major resolution of the Paris Protocol was not achieved. It was not progressing. The day President Biden took over, he joined Paris Protocol.
And that is something which one can see the pattern is changing now. Whether the US could really assume the responsibility in terms of providing those finances for green development, which could really add to the needs of the developing world, not to compromise with the development agenda or developmental agenda, because developmental agenda has to sustain. The seventh thing which again India has taken as a lead, as many of you may be aware about sustainable development goals. In 2015, the United Nations came up with 17 goals as a part of sustainable development goals. And these goals were supposed to get realized by 2030. Now time is too short. As you know that these are all very ambitious goals. Providing food security, but if everything you see, all the 17 goals, you'll find that each and everything is so ambitious. And this was not only meant for India or any one country, it was meant for the whole world. How India can take the lead in terms of coming up with the resolution of many of the challenges which are being confronted in addressing to these many sustainable development goals. And that India is taking the lead. India is very cautious. India wants to understand the predicament. India also has been coming up with a larger understanding of these challenges, and now India is talking about 2030 and beyond. So again, the sustainable development goals, again India is pushing through this G20. And that is something which is again showing the sign of world leadership, that how India really is slowly and steadily is going to assume the global leadership in leading the global affairs, and also showing a sign of very positive trajectory for its image, and also coming up with a win-win situation for all. I think that is something which is being seen happening in this G20 platform. The eighth thing, again, which is very pertinent, especially in the context of the larger post-pandemic global order, is called health security. As you know, India really showed to the world about its resilience, addressing to the needs of 1.4 billion people. And as you know that it's not easy to really address the needs during this pandemic time. I'm not saying we are not having casualties. Casualties happened, but it was addressed without any preparedness. As you know, no country was prepared. Even the United States, the so-called center of best health facility, they could not address the needs of the civilian or the citizens, their own citizens, and they have had their own challenges in terms of addressing. India showed that resilience, and not only India did for its own citizens to get those vaccines, India also did engage in vaccine diplomacy. And that is something which was seen to be a very positive trajectory for India's elevation of its image in the international system, and that was perceived by the rest of the world that India now, as I keep saying, is becoming a part of the solution to the global problem. And that is not an easy that you address to your own people, and also address to your vicinity, and address to the rest of the world. And that is what is going to be major priority now, that how the health security, suppose a similar or a more deadlier pandemic than that COVID-19 again comes, how best one could be preparing one's own self, and that preparation could really be so helpful that could address those things in no time. I'm very sorry for this. I don't know how. So again, so larger picture which I want to give, and may like to conclude, that India right now is taking up or owning up all those major responsibilities which the rest of the world really has been looking for a solution. How India is going to be cited as a part of an example that India has been able to explore those solutions. How best India could build a consensus among the members of G20 on many of these complicated areas, again would find a lot of challenges, because as you know, China will certainly be having its own idea on many of the issues. China may not really be showing the sign of conversing with India, because China also is a part of G20. And most of the time, as you know, that India will try its best to bring China on the table and see, because China also has to own the responsibility of many of these significant challenges. Still, we are not knowing whether the COVID-19 emanated from China or from elsewhere in the world, because as you know, Wuhan virus, in fact, I wrote a couple of places that it really emanated and it was called Wuhan, I used the word Wuhan virus. So again, a lot of these things which again become very pertinent of creating the roadblocks for achieving the larger goals which a nation will have the solution for, and obviously working with these differing perspective or differing minds among the G20 members will remain a part of the challenge. But India, I believe, is going to be coming up with a lot of these, in fact, solutions, and also will achieve the consensus building among the G20 members. Let me once again thank Honorable Vice Chancellor
for inviting me and obviously delivering this lecture to all of you. Certainly, I'm really delighted to be here. Thank you very much. धन्यवाद सर। जैसा कि हमने कहा था कि आपके सवालों का जवाब लाया। मैं समझता हूं कि आपके मस्तिष्क में इस टॉपिक पर जो सवाल उठ रहे होंगे उसका जवाब सर ने दे दिया और ये स्पष्ट किया कि भारत लीडरशिप के लिए तैयार है। धन्यवाद सर। अब प्रोग्राम के अंत में जो हमारी परिपाटी है वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए, इसके लिए क्या और कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, sir. It was a great opportunity to listen to you. I am assistant professor in the University Department of Economics. Myself, Dr. Kumari. Sir, I have a small query. Like on the one hand, India is going to be the emerging country. It has the responsibility to grow faster. And on the second hand, it has to grow with the greener technology. How India is going to manage this? Isn't it be very challenging for India? Like China is not compromising at all. How India is going to tackle this? I think one question more than I address both together. और कोई? Sir, myself Dr. Shraddhanji. I have also been a student of SIS and sir, privileged to listen here. Sir, on one hand, there is a talk that India is becoming agenda setter and India can take world leadership. I want to know your opinion. Can India face challenge from China? As we know that China is offering Beijing consensus in place of Washington consensus. So when India is offering its way of solution, so do you think that we can face challenge from China? Right, I think both questions are very good. See, Let me address this to make I will take two more. So, see, your question is very important. And I say that when the question of energy transition happens, where there is going to be less dependency on the use of the fossil fuel, so that is a requirement for the Paris Protocol, because more and more use of the fossil fuel, more and more increase in the concentration of greenhouse gas in the atmosphere. So in that context, India already is showing the sign of decreasing the dependency of the use of the fossil fuel in its energy constituent. India has been increasing its emphasis on the use of the solar power. India has also been using more of the wind power and is attempting to achieve a lot of the green technology. Green technology and clean technology, these two are going to be part of the agenda of G-20 declaration in September, where India would really push for, obviously India could get those technologies from the US, not for India, but across these G-20 members. That could really help decrease the concentration of greenhouse gas, because it's not a problem of the country, it's a global problem. I think how best they could decrease the dependency on the use of the fossil fuel remains a major part of the concern. So India is pushing for it. India might also like to increase the nuclear component in its energy security constituent, because as you know, for the last 30 years, our nuclear power is only 1.8%. So that the plan is how much we can use 5%, at least reach to the 5%. Because most of the time, I think we have the challenges coming from our people only. Because the time India starts building a nuclear reactor, we have anti-nuclear protests. You may have read about Jatapur protests, which really continued for months and months. And India right now has signed 10 agreements, 6 with France, 4 with Russia, to really build 10,000 megawatt of nuclear power reactor. So I think a lot of these are in process, but we have a lot of internal contradictions. It's not that easy to manage our own concerns first. But I think this is very genuine that how India could really prevail for others to see that how they decrease the dependency on the use of the fossil fuel. So that remains a major concern. I think India has shown that India target was 2030. By December 2022, India achieved the target 8 years in advance. So I think that is being seen as an example, and India will really try to capitalize on this example to tell the other countries, if India can do it, how come others could not do it? I think that is going to be a major thing. China basically, obviously, is going to remain a factor. In my last line I said that China certainly will come on India's way in terms of building the consensus on many of these pertinent, important themes which G-20 really has identified.
to really look for a consensus and a solution for. But at the same time, the way China's rise is being perceived is being seen as a threat to the global problem. And India really has to manage that particular thing independent of the larger global threat, because no country will come to protect India when any of the eventuality happens with China. So Galwan, I think India did that. In fact, only 2 weeks ago I was in Magadh, and I had the privilege to visit that Eastern Ladakh. So I think a lot of these things which I saw there, obviously they have altered the status quo. But India has managed diplomatically in terms of not making it a big issue, but at the same time giving sufficient signal to China that enough is enough, and that can really lead to a different type of scenario. The harm basically has been done from both sides because of the ill-defined line of actual control, because neither China nor India, they have defined what is line of actual control. And that is the real problem which we are facing. Wherever India has the advantages, India alters the line of actual control. Wherever they have advantages, they alter the line of actual control. It's going on, and it's going on phenomenally. So I think China remains a larger global factor. That is why India and the US also are converging. But do you know, I have been arguing this I have delivered this lecture in Europe also, where I have not highlighted that China is a threat to India. I have highlighted that China is some sort of an opportunity for India and vice versa. Because do you know, the US and the West, they want India and China to have a conflict. Why they want to have a conflict? If India and China have a conflict, that the center of gravity, which is shifting from the west to the east, will never happen. And 21st century will never become an Asian century. If 21st century has to become Asian century, then India and China have to work together. US certainly does not want to really leave the seat of power. Despite all the challenges, in fact tomorrow we are going to have a lecture which is organized by the university on the decline of the American hegemony. And deliberately we have kept that title to understand that, and that too by a professor who is teaching in the US. So I think this whole decline is happening, but it is a significant decline. The US economy is still in the largest in the GDP of the global economy. They have 22 trillion of economy, followed by the European Union, followed by China. India has only 3.5 trillion. So we have a long way to go, and our concerns are different. We have a huge, as you know that you may have seen the report today, that by 2030 India's population is going to be 1.7 billion, and that will be some sort of a different scenario for India. It will become largest in the world, 1.7 billion. So population again is one part of the thing which we are trying to understand. But China will remain a problem, and India has to in fact tackle this diplomatically and through dialogue and peace. Any question? Right. I think the population, India's population now, early part of 90s, do you know, we used to see that India's population is going to be a liability, but now we are seeing as an asset because of the dividends which India is going to give to the rest of the world. And India itself, because as you know that, if I am correct, I think right now roughly 53% of India's population comes under the bracket of 20 to 35 years. And that is something again they have written today that they are going to be shrinking and will be constant after 5 years or so. So most of these things are going to be again seen as a positive development. We are trying to really understand that how best we can really, one thing which I didn't say, that is again a part of the G-20 deliberation, that how best we can bridge the skill gap. And through our population that can be built. The skill development is going to be a major priority. In fact, now the EDC has been pushing to many universities to start on skill development. How best we can instill the skills in the beginning itself, and they can deliver the dividends from the beginning itself. So I think a lot of these things again are going to be debated and obviously achieved by India. Sir, this is my one for 3 questions. I am Dr. Pankaj, Assistant Professor, University Department of Medicine. Department of Medicine, Labor and Social Welfare. Sir, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी का जो प्रसंग मिला अभी तक में सर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर एक उसका प्रश्न यही है कि यूक्रेन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों में हमारे लड़ाई झगड़ा की बात हो रही है और एक तरफ बेस्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो सर मैं लड़ाई झगड़ा और बेस्ट परफॉर्मेंस में कहता हूँ कि अगर लड़ाई झगड़ा भी हम न करें तो हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहेगा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, इसी तरह से
ये जो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इसमें भारत हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट रहा है। भारत हमेशा बोलता है कि बैठिए, गपशप कीजिए और गपशप से अपना समाधान ढूंढिए, शांति लाइए। अभी आपको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, यही दो लाइन हम लोग का पॉलिसी रहा है यूक्रेन रसिया पे। हाउ दे कुड रीडिंग, इनफैक्ट हमारे सेक्रेटरी गए हुए थे परसों, यूक्रेन गए थे, और दैट वाज द फर्स्ट विजिट बाय एनी ऑफ द इंडियन डिप्लोमैट्स to Ukraine, and it was very useful in terms of signaling India's position to this ongoing conflict. लेकिन इंडिया का ऐसा रहा है कि इंडिया wants to really use this opportunity to work with all the multiple poles of power. The world system जो आपका है multipolar है। आपका जो हम बता रहे थे कोल्ड वार का पीरियड बता रहे थे कि how the countries were either joining the capitalist mode of production or the communist mode of production. India chose a different path. इंडिया के पास भी ऐसा नहीं है। अभी इंडिया के पास है कि इंडिया कैसे यूएस से भी काम करता है। अब कैसे सर बोल रहे थे कि रसिया से तेल खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है, वेस्ट और अमेरिका को बेच रहा है, तो उसी तरह कैसे अल्टीमेटली इन द ओवरऑल सिनेरियो इफ यू सी द यूएस इज द विनर और यूएस इज द बेनिफिशियरी, मोस्ट बेनिफिशियरी। उस केस में आपका जो आंसर होगा कि कैसे भारत जो है डे वन से चाह रहा है कि आप डिप्लोमेसी के थ्रू पीस लाइए, डायलॉग कीजिए, never indulge in conflict. Prime Minister, I don't know, number of times he has told at the global platform that war is not the solution in this current age. Because you can imagine India's position, and India never was for war. India was always for peace. Always for peace. Any question? और कोई? हाँ बोलिए। आगे आगे बोलो, चलो आ जाओ। आगे सही, आगे आ जाओ इधर आ जाओ। कोडलेस कहाँ है? कोडलेस नहीं है। अब देखिए, चीन को हम लोगों को ये समझाना होगा कि बिना भारत के चीन का जो पूरा अपेक्षा है कि वो विश्व गुरु बनेगा नहीं बनेगा, और एशिया जो आपका है 21st सेंचुरी, एशिया सेंचुरी बनेगा वो नहीं बनेगा। कि जब तक भारत और चीन साथ में काम नहीं करेंगे, एशिया सेंचुरी आपका बनेगा ही नहीं, और जो सीट ऑफ पावर जो है अमेरिका ही ऑक्यूपाई करके रखेगी। और सीट ऑफ पावर, दैट इज व्हाई दे वांट इंडिया एंड चाइना टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। इंडिया एंड चाइना का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर और अमेरिका को फायदा है। Every time they want to see and make the point that India should counterbalance China. Why India has to counterbalance China? There are many other countries. So they want to create that thinking that both the countries should be antagonized, so that they are away and the center of gravity never gets shifted from the west to the east. I think हम लोग का है अच्छा हो रहा था, करवान से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ट्रेड एक अच्छा ही था, लेकिन हम लोग का एक था कि सेल्फ लाइन बनेंगे, ये करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, लेकिन अभी भी आप मार्केट जाइए, गया में सब पार्टी चाइना वाला भी मिल रहा है। अब जो पार्टी 50 रुपये में आपको मिल जाएगा, आप 200 रुपये कम कर दीजिएगा। चाइना एक ट्रेड एंड कॉमर्स तो रहेगा ही, लेकिन डिस्पाइट द चैलेंजेस वी आर डूइंग दैट, अब आपका लास्ट 2 ईयर से बहुत सा ट्रेड में कमी आया है। यूएस हैज वाज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस के साथ मेरा अभी 191 बिलियन का ट्रेड हो गया। चाइना को सुपरसीड कर दिया। चाइना हम लोग का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा, हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और एक ट्रेड कॉमर्स का दूसरा है कि हमारा जितना जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है, चाइना जो भारत को इंसर्कल कर रहा है, और चाइना का जो BRI आया है, BRI के 2 है ना, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, दैट इज कॉल्ड लैंड मास कनेक्टिविटी। सेकंड थिंग इज कॉल्ड मैरीटाइम सिल्क रोड, दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम ग्लोबल कनेक्टिविटी। उसमें कैसे चाइना को समझाया है that it is not going to serve their larger interest, but उनका अपना इंटरेस्ट है। India also has to evolve a mechanism to encircle China, which India has been doing. आप देखिए अभी जो आपका SCO का प्रेसिडेंसी मिला था, इंडिया को चेयरमैनशिप मिला था, उसमें इंडिया क्लियर किया that China's penetration in many parts of Central Asia because of the resources which they have should get completely contained. आपका 5 जो कंट्री है सेंट्रल एशिया का, यहाँ देखिए कजाकिस्तान,
देन यहाँ है आपका किर्गिस्तान, देन ताजिकिस्तान, यहाँ पर आपका है तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका उज्बेकिस्तान। ये पांचों जो आपको कंट्री है, दे आर वेरी रिच इन आयल एंड गैस। तो इसमें कैसे एक समाधान निकले तो चाइना का जो वहाँ वर्चस्व है वो थोड़ा सा घटे। आज के भी आप पेपर में बहुत आर्टिकल आया कि भाई नथिंग, बहुत चैलेंजेस रहेगा, बट देन ऑल्सो इंडिया एंड चाइना दे हैव टू वर्क इन टैंडम, दे हैव टू वर्क एज पार्टनर्स। इफ दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द एंड ऑफ एशिया बिकमिंग एशियन सेंचुरी इन द 21st century। और कोई आप और हम लोग डीग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, दूसरा तरफ रशिया बाइक के लिए चाइनीज युआन पर हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो इसके पर आपका क्या विचार है? क्या बोले, फिर से बोलिए जरा। डीग्लोबलाइजेशन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग रशिया हमारे चाइनीज युआन को ले रहे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? रशियन ऑयल जो हम लोगों की और चाइनीज वाले क्यों हम लोग तो रुपये दे देंगे, चाइनीज वाला क्यों मिलेगा? नहीं, रशिया आपको चाइना से हम लोग को मिलकर चाइना का जो युआन जो है, आरएमबी जो है, वो हम लोग चाइना से क्यों मिलेगा? हम लोग रुपया से खरीद रहे थे, जब उसको बहुत सा प्रॉब्लम हुआ था, फिर डॉलर मांगे। चाइना के साथ हो रहा है, सो चाइना का आरएमबी इंडिया को यूज करेगा, चाइना का आरएमबी चाइना यूज करेगा, इंडिया का रुपया यूज करेगा ना। सर, इन रिसेंट अमेरिकन रिपोर्ट्स ये दावा किया गया है कि अभी जो ट्रेड जो रशिया से इंपोर्ट कर रही है इंडियन, उनको जो पेमेंट हो रहा है वो अभी युआन में पेमेंट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो उनका कहना है कि अमेरिकन रिपोर्ट्स जो अभी रिसेंटली पब्लिश उसको लिखना पड़ेगा भाई, आरएमबी तो इंडिया यूज, हमारे साथ आरएमबी इंडिया यूज नहीं किया है, लिखना पड़ेगा कौन सा यूज का रिपोर्ट है इंडिया, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इंडिया विल बाय आरएमबी $1। देखिए $1 का होता है 8 युआन, ठीक है, और $1 का अभी आपको कितना होगा, 80 या 82 क्या होगा, 82। तो इंडिया जो है वर्क ऑन दिस, देन गेटिंग दोस आरएमबी कन्वर्टेड। तो इंडिया किसने रुपया लिया था, क्या लिया था याद हो केस हुआ होगा। आई थिंक साल का पेपर रहेगा, उसका हेडक्वार्टर ढाका में है, उसको तो जोड़ा नहीं जा सकता, ढाका में रहेगा हेडक्वार्टर, लेकिन सार का एज ए कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी गिविंग एनी डिविडेंड्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फैक्टर। इंडिया का जो एमफेसिस अभी हुआ है वो बिम्स्टेक हो गया। इंडिया का जो है ना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दैट इज टू प्रमोट बिम्स्टेक। बिम्स्टेक वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1987 but got a new post given during last 7-8 years. बिम्स्टेक का जो भी है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, तो बिम्स्टेक में आपका कौन कौन है? आपका एक म्यांमार है और जो गेटवे इंडिया का है एक्ट पॉलिसी का, एक थाईलैंड है, तो 2 कंट्री आपका साउथ ईस्ट एशिया का है। बाकी कंट्री आपका साउथ इंडिया, नेपाल देखिए, नेपाल इज नॉट फॉलोइंग द वे ऑफ बंगाल, इट्स लैंडलॉक्ड, बट देन आल्सो नेपाल इज ए पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो ये बहुत अच्छा से बनाया गया था, बट इट वाज नॉट गिवन एनी पुश फॉर इयर्स। नाउ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सो पेपर आप लोग लीजिए, पढ़िए उसके बारे में और देखिएगा उसको काफी अच्छा रहेगा कैसे इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी है, तो बिम्स्टेक कैसे इंडिया प्रमोट कर रहा है। आप एमए के बच्चे एमए कर रहे क्या कर रहे हैं? दैट इज वेरी गुड। और कोई? हाँ, क्वाड की बात किया जा रहा है और इंडिया, जापान और ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर जो चाइना के एग्रेसिव रोक को रोकना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर विश्व गुरु बनना है तो चाइना के साथ कोलैबोरेशन करें, चाइना के साथ मिलकर काम करें। तो ये दोनों एक साथ कैसे इसको किया जाए? क्वाड जो है ना, क्वाड का वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। हाँ, ये चाइना के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में नहीं हो। अब बेटे बताते हैं जो भारत, आप हर चीज को देखिए इंडिया के प्रिज्म से, आप वेस्ट और यूएस के प्रिज्म से देखिए। अगर वाशिंगटन डीसी में आप इस लेक्चर को सुनिएगा तो आपको विश्व दूसरा लगेगा, गया से बोल रहे हैं तो दूसरा विश्व लग रहा है। तो आप अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखिएगा तो आपका जो ये होगा, ये कभी नहीं बोलिए कि चाइना के अगेंस्ट में है,
अमेरिका को बोलने दीजिए। एज अ इंडियन स्कॉलर हम कभी नहीं बोलेंगे क्वाड इज अगेंस्ट चाइना, हम बोलेंगे क्वाड इज फॉर ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। I will say that Quad is an effort to build a stable Indo-Pacific security architecture. अब अमेरिकन स्कॉलर चला रहे हैं, वो इसको दूसरा वे बोलेंगे, तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य से देखिए, वो तो अमेरिका बोल रहा है, क्वाड बोलने दीजिए अमेरिका को, हम क्यों बोलेंगे चाइना के अगेंस्ट में, समझ गए? हाँ, उसको बोलिए। Sir, my name is Magadh. I am a student of public administration, second semester. My question is the recent meeting of G-20 at Jammu Kashmir in May 2020. The several countries of Southeast denied or defamed India leadership against and boycotted the meeting. So what is your view on this? What India should do? आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? साउथ ईस्ट एशिया से एक ही कंट्री G-20 का मेंबर है। Sorry, South West area. साउथ ईस्ट एशिया से 10 कंट्री का मैं नाम गिनाया था मेरे लेक्चर में। एक ही कंट्री इंडोनेशिया, इवन सिंगापुर मेंबर नहीं है G-20 का, इंडोनेशिया मेंबर है। और ये जो आपका हो रहा है, इस टर्की अपोज दैट मीटिंग टू बी हेल्ड इन द टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, आपका जो करने का क्वेश्चन है, और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो कश्मीर में हुआ था, वो तो लोग करेंगे। उससे इंडिया नीड अ सक्सेसफुल मीटिंग। सपोज यू आर हैविंग अ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, which venue can better which venue can become better than Kashmir और फॉरेन पर गया, उसका venue गया होगा। टूरिज्म इससे अच्छा और कहाँ हो सकता है? इसलिए इंडिया किया, लेकिन वो कौन? Did it affect next meeting of G-20? हाँ, वो तो दिल्ली में होगा, वो दिल्ली में होगा, वो तो दिल्ली में तैयारी शुरू हो गया। आज भी देखिएगा तो दिल्ली चमक रहा है अभी। इस क्वेश्चन आवर को समाप्त हम लोग करते हैं और कार्यक्रम के अंतिम करते हैं। एक और सूचना कि कल जो हम लोग का लेक्चर है वो डीडी में होगा, राधा कृष्ण सभागार में होगा, क्योंकि यहाँ जगह छोटा पड़ रहा है, विभाग क्लासरूम है विभाग, तो आप सब वहाँ 11:30 तक पहुँच जाइए तो जगह मिलेगी। कल काफ़ी भीड़ रहेगी, भारी भीड़ रहेगी, पूरे विश्वविद्यालय के रहेंगे। सारे बच्चे आएंगे। हाँ, और सारे बच्चे कल आएंगे। और हाँ मैम, आप अपने स्कॉलर को नोटिस कर दीजिए ताकि बहुत स्टूडेंट को, ताकि वो भी आए, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर का उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे स्कॉलर हमारे यहाँ मेरे पास। आपकी परमिशन से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, कल का जो लेक्चर होगा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर होगा। और ये इसी विभाग के आपने इकोनॉमिक्स के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, सब विभाग वाला के लिए, ताकि ये कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं होता है कि उसका सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायमेंशन सब समझना होगा। इसलिए आप लोग जरूर इसमें आए और आपको मतलब आइएगा तो अच्छा होगा। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे आपके और बोलने के लिए 45 मिनट्स की बने। और मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि कल आप डीडी में राधा कृष्ण सभागार में आइए। और एक और सूचना कि 3rd बिहार सोशल साइंस कांग्रेस में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था, विभाग की ओर से नहीं, वाइस चांसलर साहब ने कहा था उसको सम्मानित करेंगे, तो हम लोग आज ही प्लान रखे थे, पर सभी बच्चे नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि सब बच्चे एक साथ आएँ और सबको सम्मानित किया जाए। तो कल ये प्रोग्राम रहेगा, जो काम उसमें किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दिया है बच्चों ने, तो उनको माननीय कुलपति महोदय कल सम्मानित करेंगे सर्टिफिकेट दे करके, जिसका बहुत ही वैल्यू होगा। अब अंतिम चरण में है हमारा कार्यक्रम, इसलिए मैं अपने सहायक प्राध्यापक जो कि JNU से ही हैं, डॉक्टर श्रद्धा ऋषि, मैं इनका परिचय नहीं करा पाया था, सॉरी, तो ये अब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव। आप किस सेक्टर में थी? मैं सर अच्छा, कौन से बैठ आपके? अच्छा, उधर रही नहीं, हमारे करीब की आईडीएस में। Thank you, sir. First of all, I would like to pay my special thanks to
Professor MD Sham Khan sir for giving me this opportunity to deliver thanks. Our Honorable Vice Chancellor sir is chairing this program and who provided another occasion in the chain of spiraling academic activities which are currently going on in the campus one by one. We are seeing Social Science Congress and one seminar, another seminar, and in this way he is trying to keep the intellectuals elevated. I pay my heartfelt gratitude to our chief guest Dr. Arvind Kumar sir for delivering enlightening and thoughtful lecture and teaching light how India is emerging as agenda setter in the world scenario and is becoming a part of the solution of global problems. I also want to pay my sincere thanks to convener of the program, Professor Sham Khan sir, Professor in charge, Department of Public Administration, our organizing secretary of the program, Anjali Ghosh sir, Professor G-20 sir, former head Department of Political Science and Public Administration, former Dean, Social Science faculty, for successfully leading this program. I also want to pay my sincere thanks to Dr. Nirmala Kumari ma'am, Head Department of Political Science, who became a part of the program and gracing us with her presence. I also want to pay my sincere thanks to Dr. Madhubala ma'am, Assistant Professor, Department of Political Science, Mirza Ghalib College, who spared her valuable time and becoming the part of the program. In this chain, I want to pay my sincere thanks to senior professors, Bharat Bhushan sir, former senior professor, Department of Economics, Dr. Gopal Singh sir, Department of Economics, Professor Nipen Srivastava sir, Department of Economics, Department of History, Dr. Pramod Chaudhary sir, Department of Sociology, Professor Deepak sir, Department of Sociology, Dr. Devendra Kumar Singh sir, Assistant Professor, LSW Department, R.K. Das sir, Department of Economics, and my colleagues. I want to pay my sincere thanks to my colleagues, Saurav sir, Abhinanand sir, Deepa ma'am, Priya ma'am, Kumkum ma'am, Kavita ma'am, Vandana ma'am, and the team from the Department of Public Administration, Amit sir, Tripathi sir, Nitika sir, and also the team of our research scholars who are always full of energy, and without their energy we can never organize this type of program. Our research scholars, Kumari Sathi, Yuki Kumari, Ashok Kumar, Imran, Ankit Singh, Suyash, Sadhana, Shailendra, and Kiran, and Jyoti also. And I also want to pay my sincere thanks to print and electronic media for covering this entire event. Our non-teaching staff, especially Vijendra, Khakaji, Ansari sir, without whose effort organizing this program would not possible. Thank you so much. कार्यक्रम के अंत में हम लोग सब खड़ा हो जाए और राष्ट्रगान पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, अगर अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही समाप्त की जाए।
माननीय कुलपति महोदय, समाप्त किया जाए। हाँ जी, अब समाप्त किया जाता है इस आशा और विश्वास के साथ कि कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए लोगों के साथ। और मैं आपको बता दूं, कल अमिताभ आचार्य जो है वर्ल्ड के टॉप 5 पॉलिटिकल साइंटिस्ट में उनका भी नाम आता है। ये भारत ही नहीं, विश्वविद्यालय ही नहीं, भारत के लिए बहुत हर्ष की बात होगी कि मगध यूनिवर्सिटी में उनका आगमन हो रहा है। सो कल के मौके को आप सब नहीं छोड़िएगा, जरूर आइए और देखिए भारत का लाल कैसे अमेरिका में अपना परचम लहरा रहा है। तो कल फिर आप सबसे मिलते हैं 11:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।